Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Neelab. The topic that I'm going to deal with today is a revision of some important bioprocess formulas. Okay, so the topic is revision of some important bioprocess formulas. Okay, so why have I decided to do this series? Because bioprocess engineering is a very lengthy topic and it has a lot of formulas. So during the course of upcoming few days, I would be focusing on some important formulas of bioprocess engineering. I would tell you that on which formulas or which type of questions are asked on these formulas so that you can easily revise them and utilize them if some questions are asked on those formulas. Okay, so first of all, let us talk about the mass balance. So the topic mass balance. So although mass balance is not very important with respect to numerical problems, mostly theoretical problems come from this, but there is a formula that you should be knowing. यहाँ पर एक formula है जो आपको पता होना चाहिए. This is mass balance, or let me just correct it. In mass in through a through system boundary minus mass out through system boundary plus mass generated within the system minus mass consumed would be equal to mass accumulated. So this is the general formula, general mass balance equation that you can modify. आप इस equation को अपने according modify कर सकते हैं. In steady state, जब steady state होता है, then this equation can be modified. तो मैं यहाँ पे I'm just telling you the general mass balance equation. तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट द stoichiometric coefficients. नेक्स्ट इज stoichiometric coefficients. सो यहाँ पे आपने देखा होगा दैट सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड जिसमें कि ये बोला जाता है कि दीज आर द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का इतना मोल है एंड दिस प्रोडक्ट का इतना मोल है. सो यू नीड टू बैलेंस ऑल दैट. ठीक है, आपको स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को बैलेंस करना होता है, तो दैट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस. So in this, often you need to have the idea of respiratory quotient. तो यहाँ पे respiratory quotient के बारे में you should be knowing respiratory quotient is equals to moles of CO2 formed upon moles of oxygen consumed. So respiratory coefficient is equals to the moles of CO2 formed divided by moles of oxygen consumed. So this formula is actually useful when you are balancing. जब आपको suppose you want to calculate the stoichiometric coefficient, you want to calculate different stoichiometric coefficients. Suppose A moles of A plus B moles of B is giving off C moles of C plus D moles of D. कुछ इस तरीके का you are having an equation and you wish to calculate what is A, B, C or D. So in this oxygen and carbon dioxide are also involved, so you can use this kind of a formula. Respiratory quotient का वहाँ पे use होता है. I've also made a video on this. You can look at that video. उस video को देख करके I've also solved a problem on that. तो ये चीज़ हो गई.
Now another very important uh, formula is electron balance. यहाँ से a lot of questions have already been asked, तो इसको समझिए. What is electron balance? What is electron balance and how can you do that? So electron balance simply means यहाँ पे आपको total electrons को calculate करके उनको balance करना पड़ता है. ठीक है. So you just calculate total electrons or total electrons से what I mean over here is that total electrons यहाँ पे मैं when I'm talking about total electrons I'm actually uh, indicating about the available electrons. So now let us understand that available electron का मतलब क्या होता है. What is available electrons? So available electrons basically means the valence electrons. तो एक इसको मैं I will just tell you using a example. Suppose जैसे कि a question is asked that we need to calculate the available electrons in glucose. So suppose this type of a question is asked the available electrons in glucose, तो आप कैसे निकालोगे इसको? So you can calculate it. You know the formula for glucose C6H12O6, ये formula पता है. And you already know that the valency of carbon is 4. So you would just multiply the number of atoms with the valency. So 6 into 4 plus you know the valency of hydrogen is 1 into 12 और ऑक्सीजन का आपको पता है -2. So -2 into 6. So this is 6 into 4, 24 plus 12 minus 12. So this will get cancelled and you would get the available electrons as 24. ओके. सो ये अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आप निकाल सकते हो. दिस इज़ ऑफन आस्क्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस वाज अबाउट अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसी में इफ़ वी वांट टू कंटिन्यू एंड आई टेल यू अबाउट डिग्री ऑफ रिडक्शन. ओके. सो थर्ड था इलेक्ट्रॉन बैलेंस और अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस कैन ऑल्सो बी नंबर्ड एज थर्ड. तो अब इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट degree of reduction. So suppose now let me just explain it on the basis of the previous example that I had taken. So what is degree of reduction? When you divide the available electrons, just divide available electrons by number of carbon atoms. जितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उससे डिवाइड कर दीजिए. दैट वुड बी द डिग्री ऑफ रिडक्शन. फॉर इंस्टेंस अगर आई एम जस्ट यूजिंग द ग्लूकोज एग्जांपल. सो एग्जांपल ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है C6H12O6 होता है. एंड वी जस्ट कैलकुलेटेड द अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट वाज 24. सो इस 24 को इफ आई डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कार्बन्स दैट इज प्रेजेंट, सो दिस इज 6. So divide this by 6, you would get 4. So 4 is the degree of reduction for glucose. So yeah, again this is very important. This has been asked in different examinations. Degree of reduction हो गया. Now enthalpy again बहुत important है. So this can be asked enthalpy. So देखिए enthalpy can be calculated using different formulas. Enthalpy का relationship you can establish with entropy also, you can establish with delta G or Gibbs free energy also. So अभी आज के वीडियो में what I'll be doing is I will be associating, I will form a relationship of this enthalpy with the temperature and specific heat. ठीक है. तो question can be asked from this also. So this is number 5. Let me just check out the number. Yeah, the number 5. So enthalpy. So this enthalpy is when temperature is changing. Enthalpy when temperature is
चेंजिंग। तो सपोज आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मैं किसी चीज़ का टेम्परेचर आई एम इंक्रीजिंग, एंड हाउ वुड यू कैलकुलेट द एंथैल्पी व्हेन इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन? तो उसके लिए डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर दीज पैरामीटर्स। तो m क्या है? दिस इज डेल्टा एच, तो आपको पता ही होगा, दिस इज एंथैल्पी। व्हाट इज m? m क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द body. What is Cp? Cp is specific heat capacity at constant pressure. ठीक है, specific heat capacity at constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे ध्यान रखना है प्रेशर कांस्टेंट है, उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखनी है। एंड दिस डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की जा रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, दिस शुड बी एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया। सो अभी नाउ लेट अस से, कभी कभी whenever we are providing the heat the temperature is not changing but the state gets changed, phase बदल गया। ओके, सो लिक्विड से गैस बनने लगा, वे वाटर से वाटर हीट कर रहे थे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट हैपेंस इज द वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। सो यहाँ पे हाउ कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फेज चेंज, यहाँ देखिए whenever we are talking about a phase change, तो क्या करेंगे? so this phase change, यहाँ पे phase change में q is equals to ml होता है, q is equals to ml। this is very very simple formula, बहुत simple है। बस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, q क्या है आपका? heat है, amount of energy that is released या absorbed। बस यहाँ पे याद क्या रखना है, what do you need to remember that the phase is changing, heat, this is q is heat, and phase is changing, phase is changing। so phase से मेरा मतलब है state से। so this is changing, what is m? m is just the mass, m क्या है? mass है। and what about the L? specific latent heat per gram। so already आपको पता होगा L latent heat होता है, छोटे क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है, so you might be knowing about that। so L is specific latent heat पर ग्राम। ठीक है, तो ये फेज चेंज में आपको ये दिया जाएगा, मास दिया जाएगा, लेटेंट हीट दिया जाएगा, यू कैन कैलकुलेट द क्यू। इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट थ्रू दिस। अब आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक्स पे। यू वुड बी नोइंग दैट थर्मोडायनेमिक्स जो है वो यूनिट 4 पे एक टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स। सो जस्ट लेट मी जस्ट check out the number। so this was 6th, let us go to 7th, thermodynamics। सो थर्मोडायनेमिक्स के केस में आपको पता है, यू वुड बी नोइंग दैट देर आर 3 लॉज। ठीक है, तो जिसमें कि पहला लॉ होता है जीरोथ लॉ, दूसरा लॉ होता है फर्स्ट लॉ, एंड थर्ड लॉ होता है जो सेकेंड लॉ होता है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। एंड जीरोथ लॉ इज़ नॉट वेरी रेलेवेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ये टेम्परेचर का है, इट्स जस्ट सेज कि ए बी और सी तीन बॉडीज़ हैं, देर आर 3 बॉडीज़, एंड इफ़ ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एंड ए एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, दिस बी एंड सी will also be in thermal equilibrium with each other। if I'm talking about first law से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, you should be knowing about the first law of thermodynamics। so it simply says that delta q is equals to delta u plus delta w आप लिख सकते हैं। and this q, ये हीट है अगेन,
Delta U is the change in the internal energy, and W is the work done. So I just want to state over here, कई बार यहाँ पे students इस delta के sign को देख करके they get confused. So you see delta sign is not something to fear about. यहाँ पे क्या है, because आपने चाहे डोरान पढ़ा होगा, चाहे शूलर एंड कार्गी पढ़ा हो, चाहे पाथफाइंडर पढ़ा हो, if you have read any book, it clearly states that internal energy cannot be measured under absolute terms. एब्सोल्यूट कंडीशन में दैट मीन्स हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि दिस इज़ द इंटरनल एनर्जी. वाई? बिकॉज वी डू नॉट नो द स्टैंडर्ड. हमें बेसिक बेस नहीं पता है. सो वी ऑलवेज वट एवर वी कैलकुलेट दैट इज़ एक्चुअली द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. वो एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी हम नहीं कैलकुलेट कर सकते. दैट इज़ वाई वी ऑफन यूज डेल्टा टर्म्स. हाउएवर यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है. व्हाट इज़ दिस डेल्टा डब्ल्यू? इसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं. डेल्टा डब्ल्यू को आपको पता ही होगा, प्रेशर इनटू पी डेल्टा वी. जो डब्ल्यू होता है दैट इज़ वर्क डन इज़ ऑफन रिटन एज पी इनटू डेल्टा वी. ओके, पी डेल्टा वी की तरीके से उसको वहाँ पे मेंशन किया जाता है. जस्ट अ मोमेंट. सो दिस वर्क डन इज़ पी डेल्टा वी. ठीक है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द next thing, P delta V. So let me just write it down again over here that this delta Q would now be equal to delta U plus P delta V. जिस भी तरीके का whatever the question is asked, आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं. Now coming to the second law. So basically the second law is dealing with the entropy से डील कर रहा है. So what is the second law? Let me just write it down. So delta S, entropy is equals to delta Q by T. This is the second law. Delta S क्या है? This is your entropy. Delta Q is your heat. This is entropy. This is heat या एनर्जी बोल सकते हो, और दिस इज टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा. So this is the second law of thermodynamics. I cannot go into the details of all this. Details में नहीं जा सकते. Time is very very less. I am just going through all of these topics quickly so that हम जल्दी से जल्दी इसको आपके लिए आपको एक brief review दे दें ताकि you can get an idea कि क्या क्या आ सकता है. Now moving towards growth kinetics. Moving towards growth kinetics. Growth kinetics. Now you would be knowing that growth kinetics में when you are talking about a batch culture, then a bacteria or whatever cell you are taking, it undergoes the lag phase, log phase, stationary phase, deacceleration phase, death phase. These are the phases that a bacterial cell or any kind of a cell would undergo. So there is an equation that I would like to tell you about the log phase. Specifically, this log phase is actually showing the balanced growth. ये balanced growth show करता है. Because why am I saying balanced growth? Because the number of cells, they are multiplying, the components of the cell are also multiplying at the same rate. That is why we are calling it as a balanced growth. ठीक है. So this is the concept, and so यहाँ पे I want to tell you one formula, that is ln n is equals to ln n naught minus k dt. So this is the formula of if I am talking about log phase, exponential phase जिसको बोलते हैं. So kd is the specific death constant, the rate at which the cells are dying. ठीक है. kd t time, किस टाइम पे, whatever time we are considering. ln n naught, what is this? This is actually the number of viable cells at time 0. Viable cells at time 0, and this is viable cells at time t. Viable cells at
टाइम t. ठीक है. So this is about growth kinetics. I can talk about this for an entire day, but time कम है. So let us just restrict our discussion up till here only. Now another formula, last formula for this video. I do not want to make this video very long. So let us just focus on the 10 equations. So over here, Monod's equation. So इसको भी देख लीजिए. What is the formula of Monod's equation? Mu is equals to mu max into s upon ks plus s. So जिन लोगों ने मेरा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग वाला जो भी लेक्चर सीरीज है दे आर फॉलोइंग, उनको पता होगा कि आई हैव एक्सप्लेन दिस मोनोड इक्वेशन इन अ इजी वे. सो व्हाट इज एस ओवर हियर? एस क्या है? कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट. कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट. म्यू मैक्स क्या है? अगेन यहाँ पे देखिए, म्यू जो है, म्यू एंड म्यू मैक्स, म्यू क्या है? आपका मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है ना? मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट. और म्यू क्या है? इट्स जस्ट द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट. स्पेसिफिक ग्रोथ रेट. एंड के एस क्या है? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट. सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट. तो जो स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे, उनको लग रहा होगा, they would be knowing or they would be able to recognize that this equation is pretty much similar to the equation that you might have studied during the enzyme kinetics. वहाँ पे अगर आपको याद होगा तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है V इज इक्वल्स टू V मैक्स इंटू S अपॉन Km प्लस S होता है, राइट? तो उसी से मिलता जुलता कुछ है. तो जस्ट व्हाट इज डन ओवर हेयर, यहाँ पे आपने v को रिप्लेस कर दिया. v हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय म्यू एंड v मैक्स हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय म्यू मैक्स. km हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय ks. दैट्स इट. ठीक है, ये चीज़ें बदली गई हैं. सो नाउ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज़ वेरी मच वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन, जब आप when you are talking about washout वगैरह के बारे में. I have talked about this in detail. So जब हम washout के बारे में बात कर रहे होते हैं, so this becomes important कि specific growth rate maximum क्या है, what is the specific growth rate, normal specific growth rate क्या है, maximum specific growth rate क्या है. And also if you remember, जब हम लोग batch culture की बात करते हैं, when we are drawing this kind of a graph, आपने देखा होगा कि इस तरीके के ग्राफ में ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके बनाते हैं. सो ईच ऑफ दीज फेजेस इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यू. सो दैट इज़ ऑल्सो आज. तो यहाँ से आपको म्यू के बारे में यू शुड बी नोइंग दैट विच फेज इज हैविंग व्हाट काइंड ऑफ अ म्यू. म्यू और म्यू मैक्स में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे पता होना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन डिफरेंट examination, specifically in GATE and GAT B. So this was the video. These are the 10 formulas that I had thought of just आज इसके थ्रू जाने में. मतलब just took 10 formulas and went through it pretty quickly, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, एक रिवीजन हो जाए. So if you really liked this video, so tell me so that I can make the next revision of the formulas next video. अगला वीडियो अगर आपको चाहिए हो रिवीजन से रिलेटेड, तो जस्ट टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको पसंद आया हो तो इफ़ यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी दिस इन डिटेल, if you want to study all of this in detail, so you can join the regular batch. So regular batch is running for GAT B and GATE BT और GAT B के लिए रेगुलर बैच रन हो रहा है. एंड यू कैन जॉइन अस, आप जुड़ सकते हैं. it has started from 20th Jan, but that is not a problem. You would be getting the recordings and the notes so that you can cover up. You would be able to cover up pretty quickly. That is my belief.
So we are introducing many new approaches, many new ways of teaching you would really enjoy. If you want to have a demo class also, you can contact us. So that's all from my side. Thank you so much. Have a good day.